welcome you watching the Wednesday edition of This Is Exclusive with me, Shavin Sen. When the entire nation was celebrating Operation Sindoor, we forgot about one of the most comprehensive action that was taken against the Maoists, called the Operation Black Forest. Tonight, we put the entire spotlight on one of the most spectacular operations that has been carried out by the Indian security forces. How exactly has this government really tackled with Red Terror? All this and much more on This Is Exclusive. I have two Deputy Chief Ministers of Chhattisgarh who will also be joining us on This Is Exclusive tonight. It's the biggest ever crackdown on Maoist terrorism. 27 Maoists eliminated in a 50-plus-hour encounter in Chhattisgarh, Narayanpur district. Top commander taken down. Forces launched Operation Black Forest when India turned its attention to Operation Sindoor. The inside story and exclusive visuals only on Republic. Editor of the Tughlaq magazine S. Gurumurthy hails Operation Sindoor, says Operation Sindoor was the will of the nation and that it has sent a strong message to the world. The only case in which Sri Rahul Gandhi ji and Srimati Sonia Gandhi ji has to take the bail. Findings of ED, they have mentioned there is around 142 crore rupees related to proceeds of crime. Without stunning revelations in National Herald case, Bijapur takes on Congress, says Congress looted Congress. Ladies and gentlemen, while the world's gaze was fixed on Operation Sindoor, India's harshest response yet to terror state Pakistan, India's security forces executed a silent yet decisive strike deep within the forests of Chhattisgarh. In what is being hailed as the largest anti-Maoist offensive in the region, Operation Black Forest led to the neutralization of hundreds of Maoists, including top commanders responsible for some of the most audacious attacks in recent history. This meticulously planned operation, spanning 21 days, unfolded in the dense Karagulatu hills along the Chhattisgarh-Telangana border. Despite the global spotlight on cross-border counter-terrorism, Indian forces demonstrated unparalleled coordination and resolve, striking at the heart of Maoist insurgency with precision and purpose. For the first time on Indian television, tonight on This Is Exclusive, we take you through the details of what I believe is one of the most fascinating operations to have been carried out, and this operation has been carried out by the CRPF. In a strong statement on the fight against Red Terror, the CRPF has said that the myth of Maoist invincibility has been decisively broken, both in the minds of the public and the police. Large Maoist formations of 300 to 400 cadres have been dismantled, fragmenting the insurgency into smaller, more manageable groups that local police can now effectively tackle. Crucially, the recovery of substantial caches of arms and ammunition has not only disrupted Maoist supply chains, but also significantly reduced their access to area weapons that could threaten the security forces in future operations. Ladies and gentlemen, I'm going to now take you through details of this entire operation. The CRPF and the state forces launched Operation Black Forest in April 2025, aiming to eradicate the Maoist stronghold in the Karagulatu hills located on the border between Telangana and Chhattisgarh. In fact, this operation was part of a broader strategy that began in 2021 with the establishment of 57 forward operating bases in key Maoist areas. Over the years, these forward bases pushed
the Maoists out of their traditional core areas of Sukma and Bijapur districts, forcing them to retreat to the tough terrain of KGH. Now that's the hill area, the ranges. Operation Black Forest, in fact, a 21-day joint operation took place in the dense Abujhmad forest of Chhattisgarh, resulting in the elimination of 31 Maoist terrorists, including senior commanders. A large cache of arms and ammunition, Maoist literature was seized, crippling this entire network of the Maoists. Ladies and gentlemen, I'm going to now take you through some of the details that we have in terms of the key highlights of this entire operation. And as they pointed out, this is perhaps the most significant anti-Maoist offensive that has been undertaken by the security forces. In fact, now I'm going to take you through the inside story. How exactly was the movement really tracked? What is it that the CRPF has basically achieved? In fact, this was with a unified command center that the CRPF basically started. Destruction of 4 weapons manufacturing units, significantly crippling their entire logistical and operational capability. So the entire destruction of the Maoist infrastructure. It's the inside story of Operation Black Forest. CRPF was successful in dismantling the Maoist unified command center. They've destroyed 4 weapons manufacturing units. Can we also take this out right now? 4 weapons manufacturing units were also destroyed. They've crippled their entire logistical operational capabilities. Now what we are being told is that CRPF forces conducted cave interventions. They targeted approximately 250 cave formations used by the Maoists for hiding, arms production and storage of explosives and rations. Now what you see, I'm going to just take you through this details. We'll stay with the visuals right now because I'm going to now help our viewers understand what is it that they have achieved while we play the entire set of images that we are putting out for the first time. On your screens, ladies and gentlemen, no other network has got access to these images. These images which basically highlight what we are being told anti-Maoist operation that has been carried out. Point number 1, it is a strategic victory for the security forces, including the CRPF, Special Task Force and the District Reserve Guard, neutralizing 31 Maoist insurgents, among them senior leaders from the People's Liberation Guerrilla Army. The second is with regards to how they have managed to destroy the entire Maoist infrastructure. As I pointed out, it's the unified command center of the Maoists that has been destroyed. They've also managed to destroy the 4 weapons manufacturing units, which basically means the logistical support that the Maoists had, that has also been completely crippled. Now, for the first time, the CRPF did manage to conduct cave interventions targeting approximately 250 cave formations that were used by the Maoists for hiding, arms production and storage of explosives and rations. As far as the seizure of arms and explosives are concerned, the forces basically recovered substantial caches of arms, which include sniper rifles, seized around 450 improvised explosive devices, 2 tons of explosives, dealing a significant blow to this firepower that the Maoists had at one point in time. In fact, remember, this has been done in such a manner, clinical precision manner, that we have not lost a single security personnel. In fact, as far as this Operation Black Forest goes, there have been 18 of our brave soldiers who were wounded during this entire operation. Now, there are multiple statements that have been made. CRPF Director General GP Singh, with whom we are given to understand he was basically monitoring this entire thing. This is the statement that has been put out by the CRPF DG. He says it's the beginning of the end of left-wing extremism, emphasizing its significance in the broader strategy to eliminate Maoist insurgency. The Prime Minister has also spoken. We'll also, in a short while from now, have both the Deputy Chief Ministers joining us. Arun Shah, Chhattisgarh Deputy Chief Minister, is joining us on this broadcast. We'll stay with these visuals. Arun Shah जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा ये पूरी ऑपरेशन, पहले हम लोग ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए भी हुई है कि जिस तरह से हर इलाके में, छत्तीसगढ़ तेलंगाना इलाके में सीआरपीएफ ने छोटे छोटे कैंप्स पे टारगेट किया, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं जो सफलता हमें प्राप्त हो रही है। आपसे जानना चाहूंगा अरुण साहु जी, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ये ऑपरेशन कैसे किया गया था, जो आज पूरे देशवासियों को जानना चाहिए कि आखिरकार ये कितना बड़ा चैलेंज था और आखिरकार हमने माओइस्ट के सबसे बड़े
टेररिस्ट, माओइस्ट टेररिस्ट को भी आज न्यूट्रलाइज किया गया है। निश्चित रूप से जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, हमने जो संकल्प लिया है कि बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बस्तर में विकास की गति बढ़े, और इसके लिए बस्तर में शांति होना आवश्यक है। और इसलिए हमारी सरकार ने पूरे समन्वय के साथ, हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी रणनीति के साथ, पुख्ता प्लानिंग के साथ और पूरी तरह से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम लगातार नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और हमारे सुरक्षा बल के जवान जो बहुत कठिन इलाके हैं, बहुत दुर्गम इलाके हैं, उन इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी कुर्रे गुट्टा में हमने देखा, एक बड़ा ऑपरेशन हमने चलाया। और अब जिस प्रकार से ये अभियान चला है, ये बताता है कि कितनी रणनीति से, किस पुख्ता ढंग से ये काम हमने अब तक किया है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है नारायणपुर जिले के इलाके में। इतनी बड़ी सफलता और इतना बड़ा माओइस्ट लीडर आज हमने किया है, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, उसके दिशा में ये बहुत बड़ी सफलता है। सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी बसवराज, जिसे ये भी कहा जाता था एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, नंबर 1 माओइस्ट टेररिस्ट जिसे माना जाता था, कई सालों से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की खोज में थी, आज उसे मार गिराया गया है। आपसे जानना चाहूंगा अरुण साहू जी, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि उन्हें ढेर करना आसान नहीं था, और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये आपसे जानना चाहूंगा। पूरे देश जानना चाहेगी कि आखिरकार बसवराज, जिसे खोजने में इतने साल लग गए, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये बसवराजू जनरल सेक्रेटरी थे और गुरिल्ला युद्ध, एक्सप्लोजिव, इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। बीटेक की उसकी शिक्षा हुई है और उसके बाद वो माओइस्ट ग्रुप से जुड़े और लगातार इस इलाके में वो सक्रिय रहकर नेतृत्व कर रहे थे माओइस्ट लोगों का। और सुरक्षा बल लगातार उन्हें ट्रैक कर रहा था और अब जाकर वो हाथ लगा है। तो निश्चित रूप से ये इतना बड़ा समूह का नेतृत्व ये करते हैं और ये इस प्रकार से इनकी रणनीति होती है कि इन तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है, पर जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल ने उन्हें मार गिराया है, ये बहुत बड़ी सफलता है। और निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, उस दिशा में आज बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें अरुण साहू जी, बिकॉज पूरे देश में आज एक रिपब्लिक अकेले एक ऐसा नेटवर्क है जिसने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की जिक्र की, और आज इस वक्त हम लोग पूरे ऑपरेशन को दिखा रहे हैं। इसलिए अरुण साहू जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े। एक सवाल लूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप भी देखिए कि किस तरह से हमने पूरे इस ऑपरेशन को देशवासियों के लिए हमने बनाया, कि किस तरह से ये किया गया था और इसके पीछे प्रेपरेशंस कितने गए। एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर आप कह रहे हैं कि माओइस्ट मुक्त इलाका, ये आखिरकार कैसे कर पाएंगे और इस वक्त और क्या चैलेंजेस बाकी हैं आपके लिए? देखिए, एक तरफ जहां बस्तर में हम सड़कों का विस्तार कर रहे हैं, जन सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, वहां बिजली पहुंचे, वहां पानी पहुंचे, वहां सड़क पहुंचे, वहां स्कूल की व्यवस्था हो, वहां पर अस्पताल की सुविधा हो, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नियत नार योजना लाकर लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, उनके राशन कार्ड बने और वहां पर सारी सुविधाएं मिले, इसकी योजना में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बस्तर के नौजवानों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन करते हैं और इस आयोजन में 1,65,000 से अधिक बस्तर के नौजवान भाग लेते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी भाग लेती हैं। और उनकी बस्तर की कला, संस्कृति और सभ्यता जो हमेशा से समृद्ध रही है, उसे भी आगे बढ़ाने का लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। तो हर
मोर्चे पर हम बस्तर की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि बस्तर में शांति स्थापित हो, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, इसके लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से सभी मोर्चों को साथ लेकर हम काम कर रहे हैं। और जिस अदम्य साहस के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान इन कामों का अंजाम दे रहे हैं, अरुण जी, इतनी भीषण गर्मी में जब 44 डिग्री का टेम्परेचर है, कितना कठिन और दुर्गम इलाका है, उस इलाके में भी जाकर ये बड़े बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुल ऑपरेशन कर रहे हैं। अरुण जी, और आज का ऑपरेशन तो और बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा है और बहुत बड़ी सफलता भी आज हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों ने कितनी पुख्ता रणनीति बनाई और ये रणनीति की बात करना बहुत जरूरी है अरुण जी, ये रणनीति की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जानकर ये खुशी भी होगी जिस तरह से इस वक्त दिस इज एक्सक्लूसिव कई लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जुड़े रहें, क्योंकि एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन क्या है, इसलिए आप भी देखें हमारे साथ। नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर हैजंट बीन मच focus on this because we were all consumed by the success of Operation Sindoor. But tonight we must talk about Operation Black Forest and what it has achieved, because today we have managed to eliminate one of the top most Maoist terrorists, who was also known as the explosive expert behind several attacks against our forces. Ladies and gentlemen, the quick highlights of Operation Black Forest. It is the largest anti-Maoist offensive that has been carried out in India, spread for almost 21 days. Lasted 21 days between April and May 2025. Now that's the longest ever operation that has been carried out. Multiple encounters in Karagutulu hills along the Chhattisgarh-Telangana border, which essentially helped the local police forces to carry out this operation. It was coordinated by the CRPF, DRG, STF and the state police units. What they have been able to do is dismember these very groups from bigger groups to smaller groups. They were restricted to smaller groups. CRPF conducted cave intervention. Now this is for the first time ever that the CRPF did manage to carry out what they believe is an innovative technique of cave interventions targeting 250 cave formations that was used by the Maoists for hiding arms production. That's another key highlight that is coming up. Key outcome, 31 Maoists were taken down, including top commanders of the Maoists were taken down by the CRPF and other units that came together. Over 450 improvised explosive devices, 2 tons of explosives, several rifles and ammunition, they all were seized as part of the Operation Black Forest. Now, ladies and gentlemen, this is the reason why we are seeing there has been a complete washout of Maoist terrorism in our country, and that is exactly what this government has been able to achieve. Remember, Home Minister Amit Shah's promise to the entire nation that we will wipe out Maoist terrorism. What has happened starting from 2004 to 2013? 6,256 people. 2014 to 2025, 1,563. These are lives that we have lost due to Maoist violence. Remember, there's not much that is spoken about, but look at the numbers, staggering. 3,340 civilians have been killed between 2004 and 2013. 2014 to 2025, it's about 606 civilians that have been killed by the Naxalites, by the Maoists. As far as the number of security personnel that we have lost, 1,114 security personnel between 2004 and 2013. Between 2014 and 2025, 163 security personnel. They've all been killed in action. Now, ladies and gentlemen, this gives you an idea of what we have lost because of the existence of this terrorism which hasn't been spoken about. Arun Sao is still with us. He's the Deputy Chief Minister of Chhattisgarh. अरुण साहब जी, मैंने इस वक्त आंकड़े दिखाएं, देशवासियों को आंकड़े दिखाएं कि आखिरकार माओइस्ट टेररिज्म के कारण हमने अपने जवानों को खोया, हमारे देशवासियों को हमने खोया है। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया था, प्रिपरेशंस किस तरह से प्रिपेयर किया गया था? क्या आपके पास जानकारी थी कि बसवराज और राजू उसी इलाका अबुझमाड इलाके में ही हैं और आखिरकार इतने सालों से वो उस इलाके में कैसे वो रह पा रहा था? आपने जो आंकड़े दिखाए वो बहुत स्पष्ट करता है
कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए किस जिम्मेदारी से काम हुआ है, किस रणनीति से काम हुआ है, ये आपके आंकड़ों से ही स्पष्ट होता है कि कितने गंभीर प्रयास, कितने पुख्ता प्रयास और इस दिशा में हुए हैं। देखिए, आज भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हमारे सुरक्षा बल के जवान जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आज आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये ऑपरेशन पूरी तरह से पूर्ण रणनीति के साथ और सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके सुरक्षा बल के जवान करते हैं। और जो सफलताएं मिल रही है लगातार, एक तरफ पिछले 1.5 सालों में हमारी सरकार बनने के बाद 337 से अधिक नक्सलियों को हमने मार गिराया है और वहीं लगभग 1200 ने सरेंडर किया। इतने ही नक्सलियों को हमने अपने राज्य में गिरफ्तार किया है। तो ये बताता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से हम बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में लगे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, देश को नक्सल मुक्त करने का, तो हमारे सुरक्षा बल के जवान उतनी ही मुस्तैदी से, उतनी ही गंभीरता से दुर्गम इलाकों में भी, अबूझमाड़ के इलाके में भी जाकर नक्सलियों का खात्मा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के विकास में बहुत बड़े बाधक हैं और इनको समाप्त करने के बाद ही बस्तर तेज गति से विकास की दिशा में बढ़ेगा और उसे हम उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट वाज Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, Arun Rao, joining us exclusively, telling us about the operation that has been carried out. Ladies and gentlemen, it's undoubtedly a major breakthrough in the battle against Red Terror. Security forces in Chhattisgarh have neutralized 27 Maoists, including top-ranking terrorist Basavaraj. The meticulously planned operation in Narayanpur has dealt a severe blow to the Maoist insurgency. In fact, this, ladies and gentlemen, tells you how our forces have been able to carry out one of the most successful operations. These images that I'm showing you is of India's most comprehensive anti-Maoist offensive that has been carried out, a 21-day-long operation that has been carried out, resulting in a situation that you have a top terrorist, #1 Maoist terrorist, Basavaraj, who has been neutralized with multiple operations that have been carried out. Remember, it was done in a very precise, meticulous manner by the CRPF, along with the state police now being able to carry out this kind of an operation. Remember, several of the Maoist commanders have been neutralized in the multiple operations that have been carried out so far. Take a look at this full detailed report. In the dense forests of Narayan district in Chhattisgarh, a joint team of the Border Security Force and District Reserve Guard launched a meticulously planned operation in response to intelligence inputs on Maoist movement in the area. What followed was a fierce gun battle that lasted more than 50 hours, and when the dust settled, 26 Maoists lay dead, including one of the most wanted insurgents in the region, Basavaraj Raju, a Maoist terrorist who carried a bounty of 1.5 crore rupees. He was believed to be behind several deadly attacks on security forces over the past decade and played a central role in coordinating Maoist activities across the Dandakaranya region. एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारायणपुर के अबुझमाड़ के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया है और इनके पास से अत्याधुनिक हथियार के साथ साथ कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में 4 जिलों की डीआरजी इस ऑपरेशन में शामिल थी, जिन्होंने बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया है। Officials have recovered a large cache of arms, ammunition and Maoist literature from the site of the encounter.
This operation is being hailed as a major success, not only for neutralizing top leadership, but also for disrupting future insurgent planning. रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं। सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। With an operation as significant as this, the centre has reaffirmed its commitment to end Maoist terrorism by 2026. देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी जो सूचनाएं आ रही हैं और जो प्राइमा फेसिया इंफॉर्मेशन मिली है, प्रथम दृष्टया सूचना उनके अनुसार एक बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध प्राप्त हुई है, जिसमें संभवतः प्राप्त जानकारी के अनुसार 25-30 से अधिक नक्सली मारे गए। The CRPF, meanwhile, has issued a statement on the crackdown. They say that a large group of Maoists have been dismembered. And with the continued recovery of arms and ammunition, the CRPF believes that the large-scale seizures have reduced availability of such arms that can be used against security forces. A growing shift is now seen in the decades-long fight against left-wing extremism, as the state pushes deeper into Maoist strongholds. While we celebrate Operation Sindoor, we must also celebrate Operation Black Forest and salute to our forces for being able to carry out one of the most comprehensive anti-Maoist offensive. That's all that we could pack in this edition of This Is Exclusive. Coming up on the other side, the trending.